I have been doing ballet my whole life. I started when I was 6 years old. You are from Italy, right? Yes. So why did you choose to come to India for learning this art form? So actually my reason for coming to India was not because of ballet. It was yoga that brought me here, which was a personal passion. And so I came to study yoga in India, and then I just ended up participating in freelance performances. What is that thing which you like most here in India? How many cultures live together and manage to live together. I personally am loving how much I'm getting to learn. How much time is required to learn ballet? It also depends a lot on your physical facility. So there are some types of bodies, but for most people, me included, you have to start as young as possible. I started when I was 6, and some would argue that that's already late. नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट की एक खास सीरीज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भारत भवन की इस पावन भूमि पर, जहां पर चल रहा है खास इवेंट सदा नीरा। सदा का अर्थ होता है हमेशा और नीरा का अर्थ होता है पानी यानी जल। उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम उसे बचा सकते हैं, हम आज वाटर कंजर्वेशन और पंच महाभूतों को लेकर बात कर रहे हैं। चाहे वो जल हो, अग्नि हो, वायु हो, धरती हो, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात कर रहे हैं। और आज हमारे इस खास पॉडकास्ट में एक बहुत ही शानदार आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माइस्ट्रो फर्नांडो सर के शिष्य हम इन्हें कह सकते हैं, जो कि वेस्टर्न क्लासिकल फॉर्म, जो आर्ट फॉर्म होता है, जो डांस फॉर्म होता है, उसे लेकर यहाँ पर भारत भवन में आए हुए हैं और स्वयं लेख कर इनका जो कार्यक्रम है उसकी प्रस्तुति आज वो लोग यहाँ पर भारत भवन में देने वाले हैं। तो हम उन्हें स्वागत करते हैं उनका इस विशेष पॉडकास्ट में। आप लोगों का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, इस पॉडकास्ट में। सो मे आई नो योर जर्नी अबाउट यू गाइस, what do you do and how did you came into this art form? Okay, I have been doing ballet my whole life. I started when I was 6 years old, and my vocational training started at 11. I went on to study at the English National Ballet School when I was 15, and my professional career started at 17 years old with the National Ballet of Capitole in Toulouse, France. And so my whole life has been about this art form, and I have been dedicating. From how long of my time do you know Maestro Fernando sir? About 4 years ago, I met him because 2 of his students actually went to the same school in London that I attended. So when I was still at school in London, I heard about him and the success story of these 2 students. So when I was visiting India for my own personal reasons, I came to take a class with him, and then we just stayed in touch and started doing performances together occasionally. Wow. So as much as I know about Maestro Fernando sir, when he came to India, there was no classes, no schools of ballet dance, but he started here, and the scope of ballet dance here in India have huge success here in India. So you are from Italy, right? Yes. So why did you choose to come to India for learning this art form? Because this art form only belongs to Italy only. Yeah, so actually my reason for coming to India was not because of ballet. It was yoga that brought me here, which was a personal passion. And so I came to study yoga in India, and then I just ended up participating in freelance performances, but I still also work back home as a dancer. So again, I'm a freelancer, so I work a little bit all over the world, including India now. So now it's since 4 years you are here in India. Yes. What is that thing which you like most here in India? That's a difficult question. No, you have time. You have I time. like many things about this country. I honestly like how many cultures live together and manage to live together. I personally am loving how much I'm getting to learn, because life in Italy looks very different, of course, than life in Delhi. So I like the growth that it has brought for me as a person and as an artist. Wow. Yeah. It was nice talking to you. Can you please describe about yourself? आप अपने बारे में क्या खास बताते हैं? आप क्यों, मतलब बैले डांस क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इंडिया में हम देखें तो भरतनाट्यम, कथकली और तमाम ऐसे क्लासिकल डांस आर्ट फॉर्म है जिनका कहीं हजारों साल पुराना, मतलब टेम्पल आर्ट फॉर्म्स हो, चाहे वॉर आर्ट फॉर्म्स हो, चाहे छाऊ नृत्य हो, जो हम और सांस्कृतिक चीज़ों में देखते हैं। तो आपको क्यों स्पेशली बैले डांस में इतना इंटरेस्ट आया? कैसी आपकी जर्नी रही, क्या खास बात रही आपके बारे में प्लीज़ बताइए। बैले में स्पेशली ये था कि
फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह बहुत करना पसंद था। हाँ। फिर उसके बाद पहले के कुछ वीडियोस वगैरह देखी, फिर फर्नांडो सर को देखा इंस्टाग्राम पे, देखा उनके स्टूडेंट बाहर जा रहे, और फिर स्टार्ट करा कि पहले स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं क्या है। फिर जैसे स्टार्ट करा तो थोड़ा बहुत लगता था कि बहुत टफ है, और फिर मैंने सोचा कि नहीं करना, जो कर रहे थे कंटेम्प्रेरी कर रहे थे, इन्वॉल्व कर रहे थे पहले। फिर वापसी गए वहाँ तो फिर अंदर से हुआ कि नहीं बैले बेस्ट है, भले टफ है पर बाद में बहुत अच्छा स्कोप है, ये सब है। फिर करते 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 इतना इंटरेस्ट आ गया कि कुछ और करने का मन ही नहीं करता, कि बैले ही बेस्ट है। हाँ। टफ है बट लेट आता है, पर लेटेस्ट आता है। कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? मुझे करते हुए 5-6 साल हो गए मुझे। 5-6 साल। तो आप बेसिकली बॉर्न एंड बॉर्न कहाँ के हैं? मैं गुजरात से हूँ। गुजरात से हैं। देन यू मूव टू दिल्ली। मूव टू दिल्ली। और फिर आप 5-6 सालों से ये सीख रहे हैं? हाँ, 5-6 साल से मैं सीख रहा हूँ। वाह। आप अपने बारे में प्लीज बताएं। मैं भी सेम यही था मेरा। मैं पहले दूसरे डांस फॉर्म करता था, पर मैंने एक दिन वीडियो देखी सोशल मीडिया पे फर्नांडो सर की स्टूडेंट की, जो कि बाहर जाके बैले कर रहे हैं, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका डांस। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई कर सकता हूँ, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इसे प्रोफेशनली करूँगा। मैंने सोचा था कि बस थोड़ा बहुत एक बार करके देखते हैं कि क्या होता है, कैसा लगता है करने में। पर जब मैंने ज्वाइन करा तो सर को लगा कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो सर ने मुझे गाइड करा कि हाँ तुम्हें इस फॉर्म में आगे जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी अच्छा स्कोप है, और तब से मैं कर रहा हूँ बैले। तो आप सभी लोग फर्नांडो सर से मिलने के बाद ही आपको बैले में इंटरेस्ट आया, फिर पहले से ही वीडियोस आपने देख रखे थे? पहले से तो थोड़ा बहुत ही था, पर फर्नांडो सर से मिलने के बाद और ज़्यादा अंदर से वो हुआ कि इतने अच्छे टीचर और कहीं नहीं मिल सकते। हाँ। और आपका भी ऐसे सेम रहा? हाँ, क्योंकि जब मैं वीडियो देखी थी तो मुझे अच्छा लगा था, और मुझे लगा था कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। पर ये है कि बैले सबसे ज़्यादा टफ फॉर्म है, तो मतलब उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा ही लगता था कि हम सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, पर सर ने हमेशा गाइड करा, सर ने हमेशा सपोर्ट करा कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ समय बाद तुम सीख जाओगे, और फिर अब हम कर पा रहे हैं काफ़ी। गाइज, अगर आपको शायद इंडियन आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं क्लासिकल, जैसे कि भरतनाट्यम है या फिर कथकली है, अगर आप लोगों को उनके बारे में कुछ पता हो तो शायद उसमें ऐसा होता है कि 9-9, 10-10 साल की प्रैक्टिसेस के बाद भी लोग अपने आप को स्टूडेंट बोलते हैं, मतलब उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। स्पेशली अगर हम बात करें तो कथकली की, तो बैले का क्या है, मतलब इफ आई मे आस्क यू दैट व्हाट डू यू थिंक कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू लर्न बैले टू बी अ लाइक प्रोफेशनल बैले डांसर? So it also depends a lot on your physical facility. So there are some types of bodies which are more gifted. So those type of people, if they start slightly later, it's maybe a little easier for them to become professionals. But for most people, me included, you have to start as young as possible. I started when I was 6, and some would argue that that's already late. For girls especially, there are people who start at 3 years old. Most professional dancers have started when they were 3 or 4 years old, or 6. Oh my God. After 10, it starts being late for women. For boys, also 10 years old is the ideal age to start. If you Like start you guys later, have started in what age? I started 18. And you? 14. 14. so it's still possible in certain exceptional cases Uh-huh. to become a professional even then, but extremely unlikely. Yeah. Like I am 25 now, so can I start learning See, ballet? you can start for personal interest. Not everybody has to become a professional dancer also. Very and nice. if you love the art form, I think you should totally learn it. Like if I really like Odissi, I should start learning it for my own passion, right? So you told me that there is a type of body. What kind of body, like slim fit guys can do? It's not so much about fitness, especially because when you're a teenager, that can change over time. But there is a certain bone structure which helps the technique of ballet. So like the shape of the feet and the shape of the knees and how open your hips are. So ballet technique is done all in turnout. So there is an external rotation happening in the legs all the time. And some people's skeleton is just more facilitated, let's say. And other people, they have to work much harder to achieve the same level of facility in the body. So of course, the younger you start, the easier it is. Wow.
Like I didn't have really that kind of body, so because I started so young and I trained many hours for many years, I was able to still achieve a professional career. So again my question was that as I know about Indian classical dance art forms, if we talk about Bharatanatyam or if we talk about Kathakali, so they say, the dancers say that it requires more than 9 years or 14 years to learn this dance form. In ballet, how many years are required? Like if you have started in 6 years, then how many years required to be a professional? It really depends dancer to dancer, how much you're training and how smart you are also, and how good your teacher is. But on so an there average, are like a lot of elements to be considered. I wouldn't say that there is a set amount of years. yes. For me, it took 11 because I started at 6 and at age 17 I was a professional. So for me it was 11 years. Wow. Then one of Fernando's sir's students started. How old was Love when he started? 14, and now he's a professional at 20. At 19 he got a contract. So it really depends. Wow. Yeah. तो वहाँ पर बहुत सारे वो भी होते हैं क्या, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी होते हैं आपके जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर? कहाँ से बच्चे हैं वहाँ पर? जापान, रशिया और यूरोप, अलग अलग कंट्री से अभी आए हुए हैं सारे लोग? अभी यहाँ पर नहीं है, नहीं है। होते हैं अभी आप लोग भोपाल मध्य प्रदेश में कितने लोगों की टीम लेकर आए हैं यहाँ पर? ऑलमोस्ट 20। 20। उसमें फॉरेन से कितने बच्चे हैं? उसमें फॉरेनर तो सिर्फ एक ही है। एक ही मैम ही है? हाँ। अच्छा, नाइस. I would love to ask you one question, that you are here in India from 4 years and you are practicing yoga and ballet dancer also, and I think so that you also teach students also who are like beginners. What are the challenges you face here in India as a student, as a professional? What do you see? I think because India already has a very rich dance culture, ballet is very new. So I think it's not yet taken as seriously as maybe it could be. And it's a growing interest, right? Like there is this performance happening in Bhopal, which I find really amazing. And because Fernando Sor created such a reality, it's starting to be possible for Indians to discover ballet. And I think India has a lot of undiscovered talent for this art form. So I think the challenge is just making the art form more mainstream for the general audience. Like everybody would know Kathak, of course, because it belongs to this country, but a lot of people have never even heard of ballet, right? Yes. So I would say that's the main challenge here. It's very nice. Yeah. आप में से सभी लोग पहली बार भारत भवन आए कि पहले आ चुके हैं? पहली बार। पहली बार आए आप? पहली बार? This is the first time you came here in भारत भवन? Yes. तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ भारत भवन के बारे में. ये पूरे इंडिया में एक ही भवन है, भारत भवन. ये संस्कृति डिपार्टमेंट और संस्कृति की जो चीज़ें हैं और कल्चरल डिपार्टमेंट की चीज़ें हैं, और जितने भी बड़े आर्टिस्ट इंडिया के अंदर आज तक हुए हैं, रहे हैं और आज भी जो हैं, वो इस जगह पर अपना आर्ट फॉर्म करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रस्तुति अपनी देने के लिए, मतलब आप मानिए कि उनके लिए ये मंदिर है, उनके लिए स्टेज है. ये भारत भवन और कहीं नहीं है. आप जब ऊपर स्टेज पे दिखेंगे तो आपको सबसे बड़ा मेनमेंट लेक दिखेगा जो 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था भोपाल में, और उसके किनारे पे ये भारत भवन बसा हुआ है. तो मैं कहूँगा कि आप लोग भी उन तमाम लकी लोगों में से हैं जो कि भारत भवन में अपनी प्रस्तुति इस बार दे रहे हैं, और बहुत कम एज में दे रहे हैं मैं कहूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मास्टर्स को इधर परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल पाता है. और आप जब भारत भवन को घूमेंगे तो आप तस्वीरें देख सकते हैं लोगों की. तो वीर भारत न्यास की हमेशा से ऐसी पहल रही है कि यूथ को मौका हमेशा मिलता रहे. एक सवाल और मेरा आपसे यह है कि जब आप लोग इस चीज़ को देखते हैं, आप यहाँ पर उपस्थित हैं सदा नीरा इवेंट में. सदा का अर्थ होता है हमेशा और नीरा का अर्थ होता है जल. सदा नीरा मतलब ऐसी नदी, ऐसा जल जो 12 ही महीने साल भर बहता रहे, हमेशा उसके अंदर जल रहे. सदा नीरा का अर्थ ये होता है. और आप स्वयं लेख जो आपका प्रस्तुति है उसको लेकर आए हैं. आप भी जानते हैं, आप दिल्ली में इस समय काम कर रहे हैं, रह रहे हैं. कितना बड़ा जल संकट आज हमारे ऊपर है, हमारे देश के ऊपर है. हमारे देश के ऊपर भी नहीं, बिल्कुल विदेश जो पूरा ग्लोब है उसके ऊपर भी जल संकट बना हुआ है. आज एज एन यूथ हमें वाटर कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ज़रूरत है. कैसे देखते हैं आप, जब आप दिल्ली मेट्रो में निकलते होंगे बाहर, तो आपने देखा होगा वो जो 2-2 रुपये ग्लास में पानी मिलता है, जबकि आज से 40-50 साल पहले हम लोग जाते थे, सुनते थे, तो पानी कभी कोई इमेजिन नहीं कर पाता था कि पानी जैसी चीज़ें बिकी जाएगी.
आज भी हम बिस्लरी की बॉटल्स पानी में पीते हैं, उसे खरीद कर पीना पड़ता है। हिंदुस्तान जैसे मैं कहूँगा देश के अंदर हमें खरीद कर पीना पड़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने पानी को इतना प्रदूषित कर दिया है। आप लोग कैसे देखते हैं? यूथ आप क्या चाहते हैं कि पानी साफ़ होना चाहिए, चाहे वो नहाने का हो, पानी पीने का हो, या फिर जो भी तमाम चीज़ें होती हैं उन चीज़ का हो? और दिल्ली में जो स्थिति अभी है, चाहे आप गंगा रिवर की बात कर लें, इंडस्ट्रियल जो वाटर निकलता है जो पानी को पॉल्यूट करता है, उन चीज़ों को आप देखते होंगे। गर्मी इतनी बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, कैसे देखते हैं आप लोग? जो एक्चुअली पीने का पानी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है अभी, और हमारे आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही कम पानी बचेगा अगर हम इसी तरह से गंदा करते रहेंगे। तो हमें इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और अपने जो पानी है जो भी इसे कम प्रदूषित करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि हम जितना हो सके उतना पानी बचाएं ताकि हमारी आगे आने वाली जनरेशन को दिक्कत ना हो पानी में। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? हाँ, सेम ही है कि पानी को जितना हो सके बचाए। Like you are a global student and you are a global professional too. What do you think about water conservation? What do you think about sustainably using the resources when it comes to water resources? And what do you think about the goals which we have to achieve globally, the SDG, Sustainable Development Goals, and the climate change? I think I don't consider myself the most competent to speak extensively on the issue, but I do think it's the single most important issue we are facing as humanity. Correct. And especially the young generations. I think we all share a fear of the future because of this, and I think we all must really work together to find a solution to Bishop. conserve water and Correct. just make life sustainable, because otherwise we are lost, right? Okay. Water is the single most important source of life itself. Correct. So yeah. Guys, आप लोगों से बात कर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम और you. ऑल द बेस्ट फॉर योर परफॉर्मेंस। वीर भारत न्यास हमेशा से यूथ की आवाज़ यूथ तक पहुंचाता है, चाहे कल्चर इंडिया का हो, चाहे इटली का हो, क्लासिकल फॉर्म्स इंडिया के हों, चाहे इटली के हों, चाहे वर्ल्ड वाइड कहीं के भी हों। संस्कृति सभ्यताओं को बचाने के लिए वीर भारत न्यास हमेशा से कोशिश करता है। आप लोगों का महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे यूथ जो आर्टिस्ट हैं, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमेशा सस्टेनेबली रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो हमारा एक प्लान होता है, जो हम सोचते हैं, उन्हें ऑडियंस तक पहुंचाएं, चाहे अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू पहुंचाएं, चाहे कैसे भी पहुंचाएं। अपनी बातचीत में हमेशा एक कॉर्नर में एक चीज़ रखें कि हाँ, सही से रहें, सही से उपयोग करें, ताकि आने वाली जनरेशन तक इस चीज़ का जो एक रिसोर्सेज को यूज़ करने का तरीका है वो उन तक पहुँचे, रिसोर्सेज उन तक पहुँचे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you.